Hello students, welcome back to my channel. Now in the past 2 years, because of the online teaching, some of the students have become weak with the fundamentals of organic chemistry. So some students requested in the chat that they want to learn the extreme basics of organic chemistry. So let's start with the very basics of organic chemistry, that is the number of carbons. I'll give you a few tables in the beginning, and once you absorb these tables, you will find that your learning of organic chemistry or studying of organic chemistry becomes a lot easier. So let's begin with that. So here we are having, like, say for example, one carbon. If there is one carbon, what do you call it in organic chemistry? Like 1, 2, 3, 4, 5. So we are drawing a table here, okay, wherein we are specifying the number of carbons, okay, and what do you call them in IUPAC nomenclature and in common names. Okay, there are two naming systems, right? IUPAC nomenclature and common names. So here we are having the number of carbons. Here we are going to have the IUPAC name, and here we will be having the common names. Okay, we'll put in the common names over here. Okay, so let's see how we can name this. C1, whenever there is one carbon in IUPAC, you term that as meth. Okay, in common names you'll call that as form. Okay, I'll draw one more column for writing down the examples. Okay, so here now, say for example, you are having this acid. Let me take acids as an example. Okay, here we are writing down the examples. Okay, so say for example, you are having HC double bond OOH. What is this? Which acid is this? This is formic acid. Yes, name of this acid is what? Formic acid. So formic acid, okay. Why the word form? Because there is one carbon. You can see there is one carbon. That's why the word formic acid, but that's the common name. In IUPAC, we'll use the prefix meth. Okay, so here it is going to be, IUPAC name will be methanoic acid, right? IUPAC name is going to be methanoic acid. So formic acid and methanoic acid. Formic acid common name. The word form comes for one carbon. Not only here, but in aldehydes also. Formaldehyde. Formaldehyde is what? An aldehyde with one carbon. And even if you have seen the structure of chloroform, what is chloroform? Chloroform is this CHCl3. This is chloroform. Remember, this is not carbon ka C. This is Cl ka C. Okay, and this is one carbon only in the structure. And because there is one carbon, it is called as chloroform. So whenever you hear about form in chemistry, remember that it is related to one carbon. Form related to one carbon. Okay, then for two carbons we'll write eth as the prefix in IUPAC, and here we'll write in common names the prefix will be acid. Okay, so say for example, we are having CH3C double bond OOH. Which acid is this? This is a 2 carbon acid. One over here, one over here. Okay, so 2 carbon acid. This 2 carbon acid, I will call it as, in IUPAC I will call it as ethanoic acid. In IUPAC it's going to be ethanoic acid. And what about the common names? Common name will be acetic acid. Common name is going to be acetic acid. Common name acetic acid, and IUPAC name will be ethanoic acid. Okay, then if I want to write the 3 carbons, IUPAC in 3 carbons is going to be prop, and in common names is going to be propan. So this table is going to help you a lot. It's going to go a long way. Okay, CH3, CH2, C double bond OOH. Right, in IUPAC we'll be calling it as propanoic acid. What we'll call it as? Propanoic acid. Because the IUPAC prefix is prop. So propanoic acid, yeah, propanoic acid. And here in common names it will be propionic acid. What it is going to be? Propionic acid. Okay, propanoic acid and propionic acid. Then we are having bute over here. Okay, bute is for 4 carbons, prefix for 4 carbons in IUPAC, and butyl for common names. Okay, so here let's see, we are having CH3, CH2, CH2, C double bond OOH. So what do we call this? We call it as butanoic acid in IUPAC. Okay, butanoic acid, NOIC, butanoic acid. And butyric acid we'll call it in common names. Butyric acid in common name derived from the word butter, because butter is having butanoic acid, and this is propionic acid. Then for pent, for 5 carbons we'll call it as pent in IUPAC, and val in common names. Now val meaning what? See, Roman number 5. Remember Roman number 5. Roman number 5 is V, right? How do you write Roman number 5 as V? So with that V you remember val. Val is the common name for pentanoic acid, right? So we'll draw 5 carbons here. Let me draw 5 carbons here.
CH3, CH2, 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 C double bond O, OH. So this becomes pentanoic acid in IUPAC. Okay, pentanoic acid in IUPAC and valeric acid in common names. It's called as valeric acid in common names. Valeric acid in common names and pentanoic acid in IUPAC names. Okay, so let's extend the table a little. Okay, and write for 6 carbons. Okay, let's write for 6 carbons. Okay, so 6 carbons will be hex, and in IUPAC it is hex, the prefix is hex, and for common it is capro. For 6 carbons we call it as capro. Now in this chapter polymers, you have something called as caprolactam. So there you understand that we are going to have a total of 6 carbons. So CH3 CH2, can I write it like this? CH3 CH2 4 times. Okay, CH3 CH2 4 times. So 4 plus 1, 5 carbons, and the 6th carbon over here, C double bond O, OH. So this is going to become what? Hexanoic acid in the IUPAC. It will become hexanoic acid in the IUPAC, and it will become caproic acid in the common names. Caproic acid in the common names. So this is your entire chart. Please remember this. This is your entire chart for the first 6 carbons in IUPAC and common names, the prefixes for IUPAC and common names. Okay, now after this we are going to see a chart of the functional groups, because that's also important. The example which we have taken over here is all carboxylic acid, or you can say alkanoic acid. That's the name for carboxylic acids. So we're going to see which all different functional groups are there. So first you absorb this, and then try writing this down, try learning it, and then listen to the next part of the organic chemistry chapter, that is basics of organic chemistry, that is the functional groups. Okay, so you can pause the video and first learn this part and then move on to the functional groups. So now we are going to do the functional groups. Okay, so which different functional? I have a certain way of making you remember the functional groups. Okay, you need to follow the sequence which I am telling you. Just follow this particular sequence and you will never go wrong with the functional groups. Okay, make sure that you don't change the sequence while memorizing this functional groups. Don't change the sequence, keep the sequence as it is. Okay, why? You will understand. So here we are going to have the functional groups. I'll just write F groups over here at the moment. Okay, functional groups. Right, in this functional groups we are having the first one as OH. So OH, you can simply call it as, it's not a not exactly a functional group, but to start with. Okay, so this is your hydroxy group. What it is? It is your hydroxy group. What is this column? This column is standing for the name, and here we will be writing the IUPAC name, and after IUPAC we will write some examples. Okay, here we'll write down the examples. So let's see one by one. Okay, so आप क्या करो कि OH है, OH is not alcohol. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि OH जहां पर आ गया वो अल्कोहल हो गया. OH is not alcohol. OH when attached to an alkyl group, then only it can be called as alcohol. Otherwise आप पानी पीते हो, पानी में क्या है? Water में there is H plus and OH minus ion. तो ये अल्कोहल हो गया क्या? This is not alcohol, this is water, but it is having OH group. Sodium hydroxide में भी OH group है, तो ये सोडियम अल्कोहल कहते हैं क्या? नहीं, राइट. इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH group है, तो ये अल्कोहल हो गया कि कार्बोक्सिलिक अल्कोहल? Not at all. Okay, these are not alcohols. Only when OH is attached to, okay, only when OH is attached to alkyl group, then only we can call it as alcohol. ठीक है, don't think that OH is alcohol. Okay, only when OH is attached to alkyl group, that is called as alcohol. And this is, the IUPAC name will be alkanol, and an example for this will be CH3 CH2OH, and that's nothing but ethanol. Okay,
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप. अब क्या करो आप कि ये हम लोग बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स OH. OH के बाद में क्या अटैच किया हम लोग ने? R अटैच कर दिया. अब R और OH के बीच में, मियाँ और बीबी के बीच में तीसरा लेके आ जाओ, यानी कि C डबल बॉन्डो को लेके आ जाओ. द मोमेंट यू पुट अ C डबल बॉन्डो बिटवीन R एंड OH, दिस बिकम्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये तरीका है याद रखने का. दिस बिकम्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड. सीक्वेंस चेंज मत करना, कार्बोक्सिलिक एसिड. OH को R लगा दिया, अल्कोहल. R और OH के बीच में C डबल बॉन्डो आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये O निकाल दो. जब आप ये O निकाल दोगे तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH. तो जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया C डबल बॉन्डो के साथ, तो दिस बिकम्स एन अल्डिहाइड. ओके, चेक आउट हाउ आई एम राइटिंग अल्डिहाइड. ये HYDE कैपिटल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यू शुड रिमेंबर दैट हाइड्रोजन व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू C डबल बॉन्डो, अगर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें अगर हाइड्रोजन C डबल बॉन्डो को डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो क्या है? अल्डिहाइड है. व्हाट इट इज? इट इज एन अल्डिहाइड. C डबल बॉन्डो हमारा हीरो है, उसके लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड में एक हाइड्रोजन ग्रुप है. ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड एज एन अल्डिहाइड. अच्छा, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड. उसी का एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, वील राइट दैट एज एन एग्जांपल. HC डबल बॉन्ड OH. So this becomes formaldehyde or methanol. Okay, methanol, IUPAC name. Formaldehyde is common name. Form meaning one carbon. ओके, सो अंडरस्टूड अल्डिहाइड. देखो हम लोग ने क्या किया, OH को अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया. OH को जैसे ही अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया, क्या बन गया? अल्कोहल. और R और OH के बीच में C डबल बॉन्ड डाल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसमें से ये ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बन गया? अल्डिहाइड. अब क्या करो, अब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो. हाइड्रोजन की जगह पे आप ले लो, या instead in place of hydrogen you take another alkyl group. Okay, in place of hydrogen you take another alkyl group, and when you do that, what will happen? Yeah, when you do that it will become a ketone. क्या बन जाएगा ये? Ketone. Okay, and IUPAC name will be alkanone. IUPAC name for aldehyde is alkanal. अल आएगा, अल एंड में, इसमें ओन आएगा, ONE. और इसमें अल्केनोइक एसिड. सो ई अल्किन में से ई निकाल के OIC लगा दिया, अल्किन में से ई निकाल के ऑल लगा दिया अल्कोहल के लिए. इसमें ई निकाल के OIC, इसमें ई निकाल के अल, इसमें ई निकाल के ओन. दैट्स हाउ वी मेक व्हाट? द IUPAC names. तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? OH कनेक्टेड टू R, देन R और OH के बीच में C डबल बॉन्ड हो, फिर ये ऑक्सीजन निकाल दिया, राइट, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप के साथ. अब क्या कर रहे हो आप ये कार्बन निकाल दो. कार्बन निकाल दोगे तो ये ऑक्सीजन नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो क्या बनेगा? ROR-. सो व्हाट इज दिस R-? R- मीन्स दैट इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो यहाँ पर भी मिथाइल ही आना चाहिए. अच्छा, कुछ बच्चों को यही पता नहीं कि अल्काइल ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल इज इक्वल टू दुनिया का कोई भी अल्केन, दुनिया के कोई भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो. जस्ट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी डैम अल्केन इन द वर्ल्ड. So let me take the simplest alkane, that is methane. Methane में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या मिल गया? मिथाइल. So this becomes an alkyl. Specifically which alkyl? It is methyl. And all these alkyl groups are represented by the letter R. Okay, all these alkyl groups are represented by the letter R. So R is what? Alkyl. Okay, तो जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल बन गया. इथेन में से हाइड्रोजन निकालोगे तो इथाइल बनेगा. प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो प्रोपाइल बनेगा. पेंटेन में से, ब्यूटेन में से, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन में से एक हाइड्रोजन जैसे निकालते जाओगे वैसे ही ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे. ओके, सो अल्केन में से एक बात याद रखना है कि अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दिया तो इट इज गोइंग टू बिकम अल्काइल. बट ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हो, बेंजीन इज C6H6, टू रिमाइंड यू, C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल के उसको C6H5 बना देते हो, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जैसे मीथेन का मिथाइल बन गया, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, ब्यूटेन का ब्यूटाइल बन गया, वैसे बेंजीन का बेंजाइल बनेगा. बिल्कुल नहीं, बेंजीन का बेंजाइल नहीं बनता. बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो उसको फिनाइल कहते हैं, राइट. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिनाइल. ओके, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते तो उसको फिनाइल कहते हैं, बेंजाइल नहीं कहते. बेंजाइल कुछ और है. बेंजाइल मतलब टोलुइन. टोलुइन क्या है? टोलुइन इज योर बेंजीन रिंग विद CH3. इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकालते हो आप तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में CH2 बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन फिनाइल एंड बेंजाइल. गेटिंग इट? देन
So here we are having like an ether. ओके जैसे ही मैंने आपको बोल रहा था कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होना कंपलसरी नहीं, कोई कंपल्शन नहीं कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ही होने चाहिए, अलग अलग भी हो सकते हैं. ओके इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल भी चलेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि इधर जो अल्काइल ग्रुप है वही इधर होना चाहिए, इसी का मतलब वो आर डैश है. खैर ये तो ईथर बन गया. अब ईथर के बाद में आप इधर क्या लिखोगे, ईथर का नाम क्या होगा, अल्कोक्सी अल्केन. आईयूपीएसी नेम फॉर ईथर विल बी अल्कोक्सी अल्केन. ओके कॉमन नेम्स बाद में बताता हूं मैं आपको, पहले ये समझ लो. आईयूपीएसी नेम्स फॉर ईथर इट इज अल्कोक्सी अल्केन. ओके अब आपने क्या किया है, सी डबल बॉन्ड आर, सी डबल बॉन्ड आर में सी निकाल दिया, ओ नीचे गिर गया, आर ओ आर डैश बन गया. अब क्या करोगे आप, अब इसमें सी डबल बॉन्डो ऐड कर दो, एक सी डबल बॉन्डो ऐड कर दो. तो सी डबल बॉन्डो ऐड कर देंगे, आर और ओ के बीच में सी डबल बॉन्डो ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम व्हाट, एस्टर. अब क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा. एस्टर इज व्हाट, ester is alkyl alkanoate. What is ester? Alkyl alkanoate. दिस इज एन एस्टर. तो अभी चलो ये हम लोग टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लेते हैं. इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, इथेनॉल, राइट. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल अभी बहुत सारे देखे हम लोग ने थोड़ी देर पहले. वन ऑफ देम CH3 CH2C डबल बॉन्डो OH. दिस इज योर अल्काइल ग्रुप. This is RC double bond O group and then finally OH group, RC double bond OH. तो ये नाम क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, it will be propanoic acid. IUPAC में it is going to be propanoic acid. कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम में ये इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम में प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड, बट आईयूपीएससी में मीथानल. आईयूपीएससी में ये फॉलो करो, अल्केनॉल, अल्केन में से ई निकाल के ऑल, अल्केन में से ई निकाल के OIC, अल्केन में से ई निकाल के अल, और अल्केन में से ई निकाल के ओन लगा रहे. तो एक एग्जाम्पल इधर इधर भी देख लेते. दिस इज द मिनिमम और द स्मॉलेस्ट कीटोन विच इज पॉसिबल. तो आर सी डबल बॉन्डो आर डैश है ना, तो मिनिमम एक कार्बन इधर आएगा, एक कार्बन इधर आएगा और एक कार्बन तो बीच में है ही. तो सबसे छोटा जो कीटोन है वो मिनिमम 3 कार्बन का है, 2 कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता, 1 कार्बन का कीटोन नहीं बन सकता. मिनिमम जो है वो 3 कार्बन का कीटोन बन सकता है. CH3C डबल बॉन्डो CH3, दिस इज एसीटोन, बट द IUPAC नेम विल बी प्रोपैन 2-on. IUPAC नेम विल बी प्रोपैन 2-on. ओके देन फॉर ईथर, ईथर के लिए क्या आएगा, CH3OCH3, CH3OCH3, this is ethers. So ethers is alkoxy alkane. क्या है ये, ether is what, alkoxy alkane. तो कौन सा alkoxy alkane बनेगा यहाँ पे, बताओ, which alkoxy alkane is this? This is methoxy, take this is methoxy and methane. ठीक है, मिथॉक्सी एंड मीथेन. ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी कि अगर आपका कोई एक अल्काइल ग्रुप बड़ा है, अभी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है ना, मिथाइल मिथाइल, एक अलग से एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर समझो मेरे पास CH3OC2H5 है, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है, दिस इज हायर अल्काइल ग्रुप, दिस इज लोअर अल्काइल ग्रुप. तो हायर अल्काइल ग्रुप मतलब बड़ा भाई, बड़े भाई को क्या देना है, अल्केन देना है, छोटे भाई को क्या देना है, अल्कोक्सी. सो दिस विल बिकम अल्कोक्सी, दिस विल बिकम अल्केन. दिस इज योर अल्कोक्सी एंड दिस इज योर अल्केन. Okay, so this will become methoxy and this is your ethane, methoxy ethane. क्या है ये, methoxy ethane. ये methoxy, ये ethane, methoxy ethane. I hope you're getting this, methoxy ethane. ओके ये मिथॉक्सी मीथेन था. अब लास्ट एस्टर की तरफ आते हैं, तो वी हैव टू टेक एन अल्काइल ग्रुप, सो यू कैन टेक एनी अल्काइल ग्रुप, CH3 देन C डबल बॉन्डो देन O एंड देन अनदर मिथाइल ग्रुप. ओके तो आपको अगर दिख रहा है कि सी डबल बॉन्डो हमारा हीरो है, उसके लेफ्ट साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड में अलग है OR ग्रुप. ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्काइल अल्कानोइड. जो ऑक्सीजन को जो ग्रुप अटैच्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ऑक्सीजन को ग्रुप अटैच्ड है वो अल्काइल ग्रुप है, और जो सी डबल बॉन्डो के साथ है वो अल्कानोइड ग्रुप है. अल्काइल अल्कानोइड नाम है ना इसका, ठीक है, ध्यान से नहीं सुनोगे समझ में नहीं आएगा. ये अल्काइल ग्रुप, जो ऑक्सीजन को अटैच्ड है वो अल्काइल ग्रुप, जो सी डबल बॉन्डो के साथ है वो अल्कानोइड ग्रुप. ठीक है, आपको अगर चाहिए तो दोबारा सुनना ये रिवर्स करके. ठीक है, तो दिस विल बिकम व्हाट, मिथाइल. कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल. और मिथाइल के बाद में अल्कानोइड कौन सा, कितने कार्बन इसमें, 2. तो इथैन लिखूंगा मैं, इथैन में क्या आ जाएगा, O8, इथैनोएट. अल्केन में क्या आता है, O8, इथैनोएट. कौन सा अल्केन है, 2 कार्बन का है, तो इथानोएट. ऐसा गलती मत करना, कुछ बहुत सारे बच्चे करते 1 2 3 काउंट कर लेते, कुछ बच्चे इसको ही मिथाइल लिख देते, ये अल्काइल या अल्कानोएट. ऐसा नहीं है. अल्काइल कौन है, जो ऑक्सीजन को अटैच्ड है वो अल्काइल है, और जो सी डबल बॉन्डो के साथ है वो अल्कानोएट है. गलतियां मत करना. ओके दिस इज मिथाइल एंड दिस इज 2 कार्बन, दैट्स व्हाई इथान, एंड O8 सफिक्स लगाना है इसके लिए, मिथाइल इथानोएट. दिस इज द नेम ऑफ द एस्टर, right, this is the name of the ester. This is the table of functional groups, very important for the basics of organic chemistry. तो 2 चीजें की है हम लोग ने अभी, 2 टेबल्स किए हैं. वन इज द नंबर ऑफ कार्बन्स,
उनको क्या कहते हैं इन कॉमन एंड IUPAC नेम्स, एंड उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप्स का एक टेबल क्या है। अभी हम लोग और टेबल्स करने वाले हैं, दैट विल बी इन आवर फॉलोइंग वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।